Namaskar and welcome to Sunset Television. I am Vishal Dahiya and you're watching our show House Highlights, where we bring you details of day's developments in both houses of parliament. Let's begin with the headlines first. Defence Minister Rajnath Singh briefs Parliament on the crash of the helicopter carrying Chief of Defence Staff General Bipin Rawat and 13 others. Both houses pay tributes to the departed souls. Parliament passes the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Amendment Bill 2021. Bill approved by Rajya Sabha accords status of national importance to 6 pharma institutes, sets up advisory council. Lok Sabha passes the Central Vigilance Commission Amendment Bill 2021 and the Delhi Special Police Establishment Amendment Bill 2021. Bills extend tenure of chiefs of CBI and ED for up to 5 years. And Union Minister Jitendra Singh shares details of India's space projects in Rajya Sabha. Unmanned Venus and solar missions to be launched ahead of human spaceflight Gaganyaan next year. Space station to be ready by 2030. Let's now take a look at all these news in detail. Defence Minister Rajnath Singh on Thursday made a statement in both houses of parliament on the crash of the military helicopter that was carrying Chief of Defence Staff General Bipin Rawat and 13 others, including his wife. He said that all efforts are being made to save the life of the lone survivor, Group Captain Varun Singh, who is on life support at the military hospital at Wellington. The Indian Air Force has ordered a tri-service inquiry into the incident. The Mi-17 V5 military helicopter of Indian Air Force was carrying CDS General Bipin Rawat, his wife Madhulika and other armed forces personnel when it crashed near Kunnur in Tamil Nadu on Wednesday. आज बड़े दुख और भारी मन से मैं 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे कि दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सभी के बीच खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरैक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंचा। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयरफोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के 9 अन्य लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप और हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक
इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल श्री वीआर चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के अफसर कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। Rajya Sabha paid tributes to the Chief of Defence Staff Bipin Rawat and all the other victims who died in a helicopter crash near Kunnur, Tamil Nadu on Wednesday. Deputy Chairman Harivansh read the obituary reference. Members observed silence as a mark of respect to the departed souls. Honourable members, I refer with profound sorrow to a tragic incident of a helicopter crash yesterday, the 8th of December 2021, at Nilgiri district of Tamil Nadu, in which India's first Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, his wife, Srimati Madhulika Rawat, and 11 other defence personnel lost their lives. Born in March 1958 at Pauri in Garhwal district of Uttarakhand, in a family of army veterans, General Rawat was commissioned on 16th December 1978 into the 5th Battalion of the 11th Gorkha Rifles. General Rawat had a vast operational experience, having served across a wide spectrum of combat and conflict situations in India and abroad. Not only did he serve on the various frontiers of the country, but also went on a command a multinational brigade in UN peacekeeping mission in the Democratic Republic of Congo. Equipped with the more than 4 decades of distinguished military service, General Rawat also held several important instructional and staff positions. He also served as the Vice Chief of the Army Staff from 1st September 2016 to 31st December 2016, and as the Chief of the Army Staff from 31st December 2016 to 31st December 2019. General Bipin Rawat had the distinction of being appointed as the country's first Chief of Defence Staff, an office which he had been serving since 31st December 2019 till his sad demise. In the last 2 years, General Rawat tried to bring in transformative reforms in the security architecture of our country. As an individual, he will always be remembered for his commitment to the nation as well as his troops. General Bipin Rawat was the recipient of several medals and honors, including the Param Vishisht Seva Medal, Uttam Yuddha Seva Medal, Sena Medal, and the Chief of Army Staff Commendation on 2 occasions. He was also awarded the Force Commander's Commendation twice while serving in the UN peacekeeping forces. In the passing away of General Bipin Rawat, the country had lost an outstanding soldier and an exceptional and distinguished military leader. We deeply mourn the passing away of General Bipin Rawat, Srimati Madhulika Rawat, and 11 other defense personnel who lost their lives in the tragic incident. The loss of precious lives is indeed painful and unfortunate. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Tributes were paid to General Rawat and all the victims of the helicopter tragedy in Lok Sabha as well. Speaker Om Birla said General Rawat will always be remembered for the dedication with which he worked to bring reforms in the system. Members also observed silence as a mark of respect for the departed souls. माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल विपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत पुण्य आत्मा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं सदन की ओर से इस दुर्घटना में वीर गति प्राप्त हमारी सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिट्ठर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर ऑफिसर अर्कल सिंह प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरु सेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभा इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। सभा की ओर से मैं सभी वीर सैनिकों की प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान दे। अब सभा दिवंगत पुण्य आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। The Rajya Sabha on Thursday passed the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Amendment Bill 2021. The bill declares 6 institutes of pharmaceutical education and research as institutions of national importance. These are located in Ahmedabad, Guwahati, Hajipur, Hyderabad, Kolkata, and Raebareli. The bill also provides for a council for the development of pharmaceutical education and research. Institutes of national importance are autonomous and have the power to hold examinations, grant degrees, diplomas, and other academic distinctions or titles. Initiating the discussion, Health Minister Mansukh Mandavia called the bill an attempt to keep pace with the changing times. ये बिल केवल 4 अमेंडमेंट के साथ आया है। 4 अमेंडमेंट मेरा है। एक है मोहाली नाई पर एक ही थी और वो नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा उसको दिया गया था। उसके बाद 6 नई नाई पर बनी, तो उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं था कि उसको नेशनल इम्पोर्टेंस है कि नहीं है, तो एक क्लैरिफाई हो जाए और उसको भी नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया जाए। ये एक हमारा अमेंडमेंट था। दूसरा हमारा अमेंडमेंट था कि नाइपर में आज पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी का ही अभ्यासक्रम चल रहा है, एजुकेशन हो रहा है। उसको हम अंडर ग्रेजुएट का भी एजुकेशन उसके साथ जोड़े, इंक्लूड करें। कोई डिप्लोमा देना हो तो भी डिप्लोमा दे सके, अदर टाइप के एजुकेशन उसमें इंक्लूड कर सके, जैसे वो वहाँ नाइपर में शिक्षा दे सके। इसलिए आवश्यक था कि वो इससे एकेडेमिया और इंस्टीट्यूट के बीच में एक रिश्ता बने, एक दूसरे को सहयोग हो। एक तीसरा अमेंडमेंट था, उसमें सभी नाइपर को एक कोऑर्डिनेटेड व्यू में हम चला सके। Several members cutting across party lines took part in the debate on this bill. While they agreed that the bill will improve research in the pharmaceutical sectors, some of the members underscored the need to raise expenditure on research and development in laboratories. हमारे देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए नाइपर्स की संयुक्त वार्षिक इंटेक क्षमता को निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फार्मास्यूटिकल शिक्षा और रिसर्च का लाभ प्राप्त हो सके। भारत को विश्व की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है, लेकिन दुनिया भर में लाखों लोगों को सस्ती और लागत
कम लागत वाली जेनरिक दवाएं भी आपूर्ति करने का कार्य भारत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इतनी कम सीटें, ये मैं समझता हूं कि इस पे पुनर्निर्णय होना चाहिए। कौन से मंत्रालय का मंत्री काउंसिल का अध्यक्ष होगा, राज्य मंत्री उसका उपाध्यक्ष होगा। सिर्फ आपने एडमिनिस्ट्रेटिव उसका बात की है, और काउंसिल में जब इतने लोग हैं तो मेरा सुझाव है कि कम से कम एक व्यक्ति उसमें आप ओबीसी का, एक एससी का और एक एसटी का अवश्य रखें। एक महिला को रखा है, आपने अच्छा किया है। सातों इंस्टीट्यूट को नेशनल इंपॉर्टेंस का बनाने जा रहे हैं, जिसका फंड, जिसकी व्यवस्थाएं, जिसके करिकुलम, एडमिशंस, ये सब काउंसिल के माध्यम से ठीक प्रकार से संचालित हो, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। Pharmacy degrees at various levels have increased, and a practice-based doctor of pharmacy, that is DPharm, that is degree program, was launched in several private institutions in 2008. But there is little published material outlining the current state of complex pharmacy education in India. This needs to be taken care of, sir. Most importantly, they have done pioneering work on treatment drugs of COVID-19 and also on antiviral treatment. But sir, you will appreciate that research is a very long-term activity. It has a long gestation period of 5 to 10 years. So I would like to request through you, sir, to hugely increase, at least by 10-fold, the budget on pharma research. The benefits of this bill. The proposed changes will ensure dynamic dialogue between pharma industry and academia, which is the need of the hour, especially in global competitive research-oriented pharma industry. शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ाई या राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान को बढ़ावा दिया। मेरी मान्यता है सुझाव के तौर पर कि इसकी संख्या और बढ़ाई जाए, और जो बड़े राज्य हैं उन राज्यों में जो अगर एक जिला को लिया गया है, एक जगह जो लिया गया है, उसको 2-3 जगह लें। मैं इस बिल के पक्ष में खड़ा हुआ और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, बिना किंतु परंतु के पक्ष में खड़ा हूं। एक आध चीजें हैं जो मैंने अभी फौरी तौर पे जो मेरी समझ में बात आई। सबसे पहली बात है कि सर, बिहार जैसे राज्य पर आपकी नजरें इनायत और हो। निवेदन करना चाहता हूं, देश की राजधानी दिल्ली है, राजधानी होने के नाते एक नाइपर आप यहां भी बनाएं तो पूरे देश के अंदर आने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। Sir, the standing committee recommends certain standards that must be set in order that this NIPER can qualify as a national institute of India, an institute of national standard. When we talk about national standards, I want to ask, my question is, when are we moving towards international standards? Investment in pharmaceutical sector in India is very meager. It has been learned that it is only less than $40 billion. The government must undertake all endeavor to enhance the level of investment, at least more than $50 billion. We have such a pool to talent in our country that it is sufficient to invest, is ensured we can certainly excel this in sector. India will launch 2 unmanned missions next year before the human spaceflight program Gaganyaan, which is planned for 2022 year-end. This was informed by Union Minister Jitendra Singh to the Rajya Sabha on Thursday. Sharing the status of other space projects during question hour, he said the Venus mission is planned for 2022, the solar mission for 2022-23, and that of the space station by 2030. In the next year, we are going to have 2 unmanned missions before finally the Gaganyaan, because that is also in the planning, because that is usually the SOP which is followed. So because of COVID, for obvious reasons, it got delayed. So in the beginning of next year, possibly, we'll have the first unmanned mission, and the second one towards the end of 2022. The hallmark of it would be that it would be accompanied with a robo. So it's being named as Vayomitra. And then following that, possibly in 2023, we have the Gaganyaan, which would undoubtedly place India in the elite club of nations, being the 4th one. Let's now take a look at the day's proceedings in Lok Sabha as well.
Lok Sabha passed the Central Vigilance Commission Amendment Bill 2021 and the Delhi Special Police Establishment Amendment Bill 2021. Now, these bills aims to extend the tenure of chiefs of CBI and ED for up to 5 years as opposed to the current fixed 2-year tenure. Both bills were introduced in the Lok Sabha on Friday. Culture of subversion being introduced by the Modi government. अब इसमें स्माइल वाली क्या बात है? This is coming from a party which has gone down in the history of subverting the democracy of the country. Having imposed emergency, also subverted not only democracy, subverted the constitution of India. We live in a world of evidence. अब ओवैसी साहब इज अ नॉन नोइंग पर्सन, ऊंची आवाज में बात करते हैं, उर्दू भी उतनी खूबसूरत बोलते हैं जितनी अंग्रेजी बोलते हैं, तो कुछ लोग उसी में बह जाते हैं. लेकिन अब वो कह रहे थे कि इंटेग्रिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो उन्होंने एक हवाला दिया एक केस का, उन्होंने कहा इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. But is this not contempt of the Constitution to question a constitutionally constituted body is existed in the selection process and which has come down the years, down the decades, not invented, not constituted after 2014. It's not directly related to this per se, so I let that pass. Now, एक बार आया कि why raise international angle? There's a huge international ramification to the kind of methodology which is evolving every day, and you have seen so many cases. और ये foreign laundering के cases सारे ED के हिस्से में आते हैं. और जैसे मैंने कहा कि we cannot only depend on the institutional intelligence, information and confidentiality, also of the individual who is at the head of it. And moreover, जो हमारी FATS है, Finance Authority, FATF, उसने ये सुझाव भी दिया है कि some of the countries will have to look into how to upgrade their capabilities. Amendment Ordinance number 9 of 2021, whether it will attract Article 123, that is the first point to be agitated and to be discussed. So regarding this issue, the Honorable Supreme Court in several cases repeatedly said that the Constitution does not permit the President or the Governor as a parallel lawmaking authority independent of the legislature. Now the Governor or the President, in this case the President, is becoming a lawmaking authority. If it is in the extraordinary circumstances and compelling circumstances, it is, if there is any necessity or exigency, definitely we will concede and we will accept. Yes, the Constitution is empowering the President to promulgate ordinance. I would like to know from the Honorable Minister, please tell the House what is the exigency, what is the urgency, what is the extraordinary circumstances prevailing to promulgate this ordinance so as to extend the tenure of a particular individual officer. What did the Supreme Court say in the Jain Hawala case? It says, no doubt the overall control of the agencies and responsibility of their functioning has to be with the executive, but then a scheme giving the needed insulation from extraneous influences, even of the controlling executive, is imperative. So therefore, the entire intention of the Jain Hawala judgment was to insulate the Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate from the influence of the controlling executive, which is the government. And these bills seek to do precisely the opposite. Collective wisdom, Enforcement Directorate में देखा जाए तो 30 साल से कम का experience है. Now you want Enforcement Directorate to fight all the white collar crimes and not allow them for a better collective wisdom is double standards of this House. And therefore, I stand here to say that this bill brings in that requisite strength to our departments to fight all the crimes that are in the country, so make the country strong. Dhanyavad. CBI was forcibly, physically thrown out by the government
And now we are bringing a law. No, we wanted to have a fair investigation. We wanted to have a fair man. Who will believe? No one. Who will believe, sir? No. Sir, then this order was questioned by the Supreme Court. Sir, when such a bad experience was seen in the country, who will believe that the amendments which gave 5-year tenure of directors of CBI ED are brought to enhance the performance of the agencies? The concept of extension of tenure has not been deliberated anywhere within the government or in the selection committee. The political leaders are harassed and arrested by the CBI throughout the country. This belongs to the opposition political parties. Which political party's name I will take here? Almost every opposition political party who speaks against the ruling party here, they are arrested. They are victimized. Sir, political persons are interrogated. They are taken for interrogation by the CBI and ED. For how many hours? 9 to 10, 11 hours. Days in, days out. महाराष्ट्र में जिस तरीके से ईडी, एनसीबी और सीबीआई को वहां को बिठाकर जिस तरीके से लोगों को परेशान करना, कोऑपरेटिव सेक्टर को परेशान करना, शुगर इंडस्ट्री को परेशान करना और महाविकास आघाड़ी के जो शासन करता है उनको परेशान करना, ये जो काम चले वो रोकने का काम करे और लोकशाही का जो मकसद है वो सही तरीके से अमल में आना चाहिए। लोकशाही में राज करना सबका अधिकार है और वही हिसाब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार काम करते, उनमें कुछ गलत हो जरूर सजा करे। सरकार ने ये कहा है कि एक एक साल में आपके काम की समीक्षा होगी और अगर आप सही ढंग से काम कर रहे हैं तो हर एक साल के बाद एक साल के लिए आपको बढ़ोतरी मिलेगी। तो इसलिए इसमें कोई बहुत बहस की गुंजाइश नहीं है। मुझको लगता है कि इस बिल में कोई बहस की गुंजाइश नहीं है और मैं इस दोनों बिल का भरपूर समर्थन करता हूं, ये उनके इंडिपेंडेंस के लिए। The bill was introduced in Lok Sabha on 3rd of this month. What was the tearing hurry to bring an ordinance? Why this ordinance when Parliament was to meet in last week of November, when within 2 weeks' time, the extraordinary provision that is provided in our Constitution of promulgation of ordinances is supposed to be done in an extraordinary situation. What was the extraordinary circumstances that compelled this government, which could not wait for 2, if not 3 weeks? Please, I want a specific answer. What will be the criteria for 1 year extension plus? And this is my question. The other question which I want to ask the Honorable Minister, I would like to take that point actually from Raut ji. Raut ji ने कहा कि अनिल देशमुख जी के बारे में वो बोल रहे थे, तो उन्होंने ऐसे कहा कि उनके यहाँ ईडी सीबीआई सारे चले गए। वो एक वो चीज़ भूलना गए कि जैसा हमारे यहाँ विक्रम बोलते हैं, मीन्स इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिकॉर्ड। His house and his family was raided not once, twice, thrice, 7 times in a year. 7 times. The union government has hastily passed an ordinance in the name of public interest. But if it truly wanted to amend to the CBC Act 2003 in public interest, it should have framed measures to address the CBC's malfunctioning. The current bill does nothing to improve or strengthen it, thus the problems will persist and possibly worsen. For instance, in the year 2021, only 2 monthly performance reports, January and February, have been published. India, insofar as other officers similarly ranked do not have this privilege, and the process of criminal investigation by these two agencies is feared to be less independent and more open to the political pressure on account of these changes. Sir, therefore, I vehemently oppose these two bills, which is against the conscience of democratically and constitutionally minded people of this country. That's all we have in this edition of House Highlights. We'll come back again tomorrow with the details of day's developments in both houses of Parliament. Till then, keep watching Sunset Television. Thank you.